चलो सबसे पहला केस स्टडीज लिखो। नंबर 1, in the face of acute famine, in the face of acute famine, in the face of acute famine, 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 in the district, you as an area officer, have instructed your subordinate, to procure food grains, from the FCI godown, to procure food grains from the FCI godowns located in the adjoining district, full stop. This would make the food grains, available to the public. Through PDS shops. Full stop. Considering the gravity of the situation, this task has to be done immediately. Because majority of the people in the district are poor. In the district are poor. And therefore cannot buy the food at the market price. Full stop. However, you were told that all the truck operators have formed a cartel, KCARTEL, cartel, and are asking for three times the usual
3 times the usual transportation rate. 3 times the usual transportation rate. Full stop. In order to exploit the situation, in order to exploit the situation, full stop, this would nullify your efforts, this would nullify your efforts as the price of the food grains, as the price of the food grains would increase, as the price of the food grains would increase due to high transportation charge, due to high transportation charge. Full stop. ठीक है. Next question number 1. Following are the some suggested options. Following are the some suggested options. Following are the some suggested options. Please evaluate the merits. Please evaluate the merits and demerits. Please evaluate the merits and demerits of each of the options. Of each of the options. Full stop. Number 1. Threaten the truck owners. Number 1. Threaten the truck owners of severe consequences. Threaten the truck owners of severe consequences if they do not fall in line, if they do not fall in line and cancel their transportation permits, and cancel their transportation permits. Full stop. Transport the food grains. Number 2. Question number 2. Transport the food grains by railway. Transport the food grains by railway, though it may take a week. Though it may take a week. Next. Third. Agree to pay the truck owners. Agree to pay the truck owners the transportation charge. The transportation charge they are demanding. Transportation charge they are demanding so as to ensure the availability, so as to ensure the availability of food grains, so as to ensure the availability of food grains. But searching for alternative and affordable transportation, but searching for alternative and affordable transportations. Full stop. However, take
legal action, however take legal action against the truck owner, against the truck owner at a later time, against the truck owner at a later time. Next, asking the state government, number 4, asking the state government for sending some help, asking the state government for sending some help. For sending some help. लास्ट एक और क्वेश्चन लिख लो, मतलब क्वेश्चन बी, however फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये सारा क्वेश्चन फॉलोइंग जो लिखा हुआ है ना, फॉलोइंग वाला ऊपर में सबसे ऊपर जो लिखा था फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन दिया ना, ये नंबर ए है, एक बी क्वेश्चन भी लिखो, मतलब ए के अंदर में ये 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस कोई भी ले सकते हो, एक और बी लिखो। हाँ, also indicate without necessarily restricting to the above options, also indicate without necessarily restricting to the above options the course of action you would like to follow, the course of action you would like to follow to the above options, the course of action you would like to follow, giving proper reasons for the same, giving proper reasons for the same, giving proper reasons for the same। ठीक है, चलो लिखो थोड़ा, मतलब लास्ट वाला समझ में आया ना। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोला है कि वो चारों ऑप्शन छोड़ के अगर और भी कोई ऑप्शन आपको लगता है कि आप ले सकते हो, जस्ट इंडिकेट दैट। कार्टेल, कार्टेल, कार्टेल माने ब्लॉक, यूनियन, वो यूनियन बना लिया लोग, बोलता है कि हमको ज्यादा रेट चाहिए, मालूम होता है ना, जैसे दवाई की दुकान में क्या होता है, इस बार कोरोना के टाइम में यही हुआ था ना, कार्टेल बना लिया था, ये रेट, विटामिन सी का टैबलेट आपको मिल रहा था 100 150 रुपए में, 10 रुपए वाला टैबलेट 150 में मिल रहा था। हाँ हाँ, अरे और क्या सर, स्पेलिंग कौन सा? CARTEL, कार्टेल। जो सुबह हमने बोला था, आज APSC का जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन बोला था वही आया, एग्जैक्ट वही है। हमने कुछ बच्चों को बोला था कि आप लोग विमेंस का कर लेना। क्वेश्चन है, रोल ऑफ विमेन इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नॉर्थ ईस्ट, इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। स्किल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर सम, बट एक ऑप्शन सुपर का छूट गया। Knowledge being a leader is great, but being a follower, it's no man is an island, is its own reward। देखो क्वेश्चन क्या है, सुन लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, ए गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज, एथिक्स का है, ध्यान रखना। बीइंग ए लीडर इज ग्रेट, बट बीइंग ए गुड फॉलोअर इज ग्रेटर स्टिल। नो मैन इज एन आइलैंड, नॉलेज इज इट्स ओन रिवॉर्ड।
Fifth, the National Education Policy 2020, its merits and demerits, problems of industrial development in Assam, and role of women in the socio-economic development of India's northeast, and skill development and employment. चलो चारों ऑप्शंस को डिफाइन करो, क्यों नहीं इसको लोगे, ये नहीं खाली राइट वाला लिख दिया। This should bring an outcome mostly. ओके ओके ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन बताओ। हो गया? नहीं समझ में, क्यों नहीं समझ में? आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। एक लेजिटिमेट, सपोज करो आप एक ऑफिसर हो, ठीक है, और ऑफिसर हो तो आपको कौन सा एक्शन आपके लिए अच्छा होगा और दोनों चीज आपका सॉल्व करेगा। यू शुड टेक मतलब वैलिड डिसीजन ना, आपके हाथ में है सब कुछ, यू कैन टेक एनीथिंग, बट हर एक एक्शन का आपको प्रूफ देना पड़ेगा आप क्यों ये एक्शन लिया। कैसे लिखेंगे सर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी एज अ एरिया ऑफिसर आई वुड लेट देम नो कि consequences ऑफ देयर एक्शंस ना। हां, मतलब ट्रक ड्राइवर का ऐसा करने से क्या तुम लोगों का consequences होगा। हां, चलो वेट करो, सबका हो गया? कैन वी डिस्कस? चलो, अरे गुड, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या है ऑप्शंस?
पहला ऑप्शन है डू नथिंग एज इट डजंट वांट टू रिस्क, नहीं सर, पहला ऑप्शन क्या है? हमारा क्वेश्चन ही गायब हो जाता है। Threatening the truck owners of severe consequences if they do not fall in line and cancel their transportation permit। ठीक है, देखो ये क्या है ऑप्शन सारी? What is your option? Sir, first of all, मेरिट डिमेरिट बताना, एनालाइज करना। हाँ, आपको एनालाइज करना, मेरिट डिमेरिट्स बताना और उसका कौन सा ऑप्शन आप लोगे वो बताओ। First of all, actually wouldn't be wise in that given situation. First of all, there should be negotiation to try to persuade them and bring them into country. Options आपका लिमिटेड है। Threaten the truck owners of the severe consequences if they do not fall in line and cancel their transportation permit। नंबर 1 ऑप्शंस लोगे कि नहीं लोगे? Why? Sir, that is not very practical. Very practical. Why? क्यों? Because the people are protesting, and you are again telling them to like instead of negotiating, you are threatening them that is. They will also protest. No sir. मतलब ट्रक ड्राइवर को अगर बोलोगे तो वो भी तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। कार्टल्स बना ही लिया तो प्रोटेस्ट करने में कितना देर लगेगा? Yes, sir. चलो फाइन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। That would be like adding फ्यूल टू द फायर। ओके मधु, सेम सुन के बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं है। हम बोले ये वाला ऑप्शन सही होगा तो सर इसमें डीमेरिट्स मेरिट्स क्या लिखेंगे? इसका डीमेरिट्स क्या है? मेरिट तो है नहीं, डीमेरिट्स ही है। क्यों में डीमेरिट्स है? क्योंकि भाई ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, और आप उल्टा ये ट्रक ओनर का झमेला क्यों पाल लोगे? ट्रक ओनर का झमेला पाल लोगे तो वो क्या होगा, वो लोग भी रास्ते में बैठ जाएंगे तो और झमेला खत्म। आपका मेन मोटिव क्या है? योर मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड फूड टू द फार्म, मतलब जो बेचारे गरीब लोग हैं, है ना, तो वो तो ऐसे ही डिफीट हो जाएगा। वो ये भी बंद हो गया तो हो भी गया ऑप्शंस। तो ऑप्शंस 1 इज इनकरेक्ट, वो डीमेरिट ही भरा पड़ा है, इससे कोई पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? कैसा क्लियर है? क्या है पहला वाला ऑप्शन, सही है कि गलत है? हाँ यही लिखा ना। First option would not be good as this could bring an outcome of mass agitation by the cartel formed which could disrupt the services and hence would worsen the situation। Good, सही है। ठीक है अर्पित, तो ऑप्शन 1 समझ में आया। ऑप्शन 1 इज नॉट एडवाइजेबल एंड नॉट इट इज गुड, क्योंकि ये फर्दर प्रॉब्लम को एग्रावेट कर देगा। चलो ऑप्शन 2 क्या है? ट्रांसपोर्ट द फूड ग्रेन्स बाय रेलवे थ्रू दो इट मे टेक ए वीक। This is also not viable at the moment. ये भी वायबल नहीं है। क्यों वायबल नहीं है? Because food is something that people require. मर गया तो? And in a way people will die. हाँ, तो ऑप्शन 2 भी सही नहीं है। It could consider second option. It would further deteriorate the situation because of the time consuming by the railway. However, setting up the temporary ration घाट near the railway station could suffice। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है हरप्रीत। रेलवे स्टेशन में करोगे 1 हफ्ता लग जाएगा। It will cause problem, है ना? तो second option is also not correct। Third option, agree to pay the truck owners transportation charge they are demanding। ये सही है। ये इसको इस ऑप्शन का सही है। For the moment, sir, this would be wise to do it. It would be wise, or यहाँ पे थोड़ा सा add करके we can do like agree to pay at a later date while keeping the negotiation window open until this the food grains are arranged to railway. Until we मतलब अभी इन लोगों को बोल दोगे ठीक अभी भेज दो पैसा, तो वो तो ऐसा ना हो जाएगा। गवर्नमेंट से अगर वो तो बिल लेके देंगे ना, और गवर्नमेंट को तो इतना बिल देना ही पड़ेगा। नेगोशिएशन कैसे करोगे? तो साफ साफ लिखा ना, एग्री टू पे द वर्कर्स ट्रक ओनर्स द ट्रांसपोर्टेशन, तो बिल बेल्टी कट जाएगा ना, तो उतना रेट आपको देना ही पड़ेगा। लाइफ ऑफ सिटीजंस आर मोस्ट वैल्यूएबल, करना ही पड़ेगा। तो आपको ये इस रेट में आप दो दोगे, है ना? मतलब जितना 3 गुना ज्यादा मांग रहा, ध्यान रखना। क्या बोला? एग्री टू पे द ट्रक ओनर्स द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे आर डिमांडिंग सो एज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स बट सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, हाउएवर टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द ट्रक ओनर एट द लेटर टाइम। यस सर, ये तो अच्छा, दिस ऑप्शन वी कैन कीप कंसिडर। ओके, ये ऑप्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग 3 गुना ज्यादा लगा मतलब मांग रहा है रेट भाड़ा, उसको दे देते हैं 3 गुना ज्यादा भाड़ा, बाद में उसके खिलाफ हम लोग एक्शन कर लेगा ऑफिसर्स। तो
दिस अच्छा ऑप्शन है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला, आस्क द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेंडिंग सम हेल्प। हाउ अबाउट दिस वन, if a person would have to take arrange a vehicle from some negotiation could be done to reduce the time and tackle the fourth, asking for help from the state would further create a question on my administrative skills and hence acute repercussion could be faced by me, so options are not। नहीं, ये ऑप्शंस में जो आपने लिखा अर्पित ये सही नहीं है। देखो अब है ही नहीं तो क्या करोगे, तो स्टेट से हेल्प मांग ही सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। इट इज नॉट रॉन्ग ऑफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम द स्टेट, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वही लोग भेजेगा, अगर शॉर्टेज है तो क्या करेंगे, भेजेगा तो वही। बट इट वुड नॉट फुलफिल योर मोटिव। मेन मोटिव क्या है, मोटिव ओरिएंटेड होना चाहिए ना, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट्स को। तो टारगेट क्या है, टारगेट खाना खिलाना है लोगों को। आप वो सामान अरेंज करोगे, स्टेट गवर्नमेंट भी तो टाइम लगाएगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि तुरंत उसके गोडाउन में रखा हुआ उठा के दे दिया। दे विल आल्सो हैव टू अरेंज दिस ऑल दिस ट्रांसपोर्टेशंस, तभी वो आ पाएगा। इट विल आल्सो टेक मोर टाइम्स। देन द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। तीसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन 3 आपका दोनों मोटिव को फुलफिल कर रहा है। एक सबसे पहला मोटिव है जो टारगेट्स है, दैट इज टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स, वो आपका अचीव हो जा रहा है। अब बाद में एट द लेटर स्टेज यू कैन जस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दोस करप्ट ऑफिस, मतलब जो ड्राइवर्स, उनके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हो। आई वुड हैव टू टेक द हाँ क्या, Because majority of the people in the district are poor and therefore cannot buy the food at the market. हाँ, इसको कैसे? तो इसलिए तो आपको मार्केट में पीडीएस देना पड़ेगा ना। पीडीएस तो इसलिए देना पड़ेगा ना, फूड ग्रेन्स का। खरीद नहीं सकता इसलिए तो प्रॉब्लम है, तो मार्केट जाके खरीद सकते तो खरीद ले, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट में फूड अवेलेबल नहीं, मार्केट में फूड अवेलेबल है, सस्ता अवेलेबल नहीं है, पीडीएस में नहीं है आपका माल। समझ में आ रहा ना। कोरोना में क्या हो गया था, ऐसा थोड़ा ना मार्केट में फूड नहीं था, बट महंगा था, इसलिए गवर्नमेंट हर गली गली आपका आटा चावल बेच रही थी, है कि नहीं। समझ में आया पॉइंट ये दनु? सर इसको कैसे लिखना है वो नहीं समझ में आ रहा है सर, डायरेक्टली लिखेंगे क्या? हाँ लिख लो, नहीं बनाएंगे कैसे, इसको शुरू से लिख लो, शुरू से। अरे ऑप्शन वाइज लिखना है। चलो सबसे पहला ऑप्शन ए लिख लो, कैसे लिखोगे सर? जैसे कि लिखिए ना 1 2 3 इवेंट हम लोग कर लेंगे। हाँ, सीक्वेंस वाइज कैसे लिखिए? क्या सीक्वेंस वाइज? इसका कैसे स्टार्ट करें? हाँ लिखो, बता रहे ना, लिखो। The situation is characterized as acute famine. The situation is characterized as acute famine and general shortage of food. In this condition, मैं सिर्फ छोटा थोड़ा बताऊंगा, सारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन, नंबर 1 ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 would ensure that truck owners are punished for their undue exploitations of the situation, full stop. As an area officer, it is my duty to ensure that the price of the essential commodities
including the transportation charge, including the transportation charge, are not artificially and unfairly inflated through some are unfairly inflated through some mischievous means. Through some mischievous means. Full stop. From that end, it could be successful in performing my duty. In performing my duty. However, this would not necessarily ensure the availability of food grains in the district. Ensure the availability of food grains in the district, which is more important in the given situation. Which is more important in the given situation. Full stop. Therefore, this option is not advisable. As the main objective would not be served. As the main objective would not be served. Full stop. Next, option 2. This option is not viable. As it would take longer durations. And people may die. Next, third. Going by the third options, it is the most appropriate decisions, as it would serve my
mean target, mean target, full stop. It would be more desirable, it would be more desirable to take action against the erring truck owners. It would be more desirable to take action against the erring truck owner, erring, EARING, erring truck owners at some later time, at some later time, as it would serve the, as it would serve the dual purpose, as it would serve the dual purpose of making available food grains, of making available food grains in the immediate situations, immediate situations, and also punishing the truck driver owners, and also punishing the truck owners. ये ऑप्शन बाद में ट्रक और स्टॉक होने के ऊपर लीगल केस भी कर सकते हैं। फर्स्ट माना है एंड देन फिर हम लोग को ऊपर पहले तो उन लोग कूटेगा ऑफिसर्स, बोला कि हमारी जरूरत थी और तुम लोग इलीगली रेट बढ़ा रहे हो। क्यों रेट बढ़ाया वो लोग? पहले तो सबको जेल में डालेगा, एक बार मोटिव पर्पस फुलफिल हो गया फिर सबको उठा के जेल में डालेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते। इलीगली दे हैव इंक्रीज द रेट। व्हाई दे हैव इंक्रीज द रेट? रेट क्यों इंक्रीज किया वो लोग? रेट इंक्रीज करने का कोई मतलब नहीं था ना भाई, क्यों इंक्रीज किया वो लोग रेट? आप बेमतलब का ये सब चीज करोगे तो सही नहीं है ना, तो पनिश तो उसको तो लिखा हुआ है ना, लीगल एक्शन लेगा इसके ऊपर में। तो यहाँ पे भी तो it written the truck owners of severe consequences if they do not fall in line. वो तो पहला वाला, आपका मेन मोटिव आपका फुलफिल होना चाहिए। आपका मोटिव क्या है? मोटिव है सामान हमारे पहुंचना चाहिए। एक बार सामान पहुंच गया, सर्विस डिलीवरी आ गई, फिर लो लीगल एक्शन उनके खिलाफ, क्योंकि कोई भी चीज लॉ से ऊपर नहीं है ना। आप गलत टाइम में, जैसे मेडिसिन वाले को क्या हुआ था कोरोना में, यही हुआ था। जब एक बार देख लिया गया कि रेट और ठीक है, जा रहा है सारा सामान, फिर उसके बाद एक्शन लिया उनके खिलाफ, है कि नहीं? That was one thing. इसमें लास्ट में ये कहना चाहिए जो क्वेश्चन है उसमें, this would nullify your efforts as the price of the food grain would increase due to the high transportation charge. इसमें ऑप्शन 3 कैसे हो? ऑप्शन हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका हो रहा है, नलीफाई आपका क्या है उसमें? आपको केवल ऑफिसर को वो करना है ना सर, सस्ता दाम में इसमें तो प्राइस हाई होने का खतरा। हाँ, प्राइस हाई होने का खतरा था। प्राइस हाई किसका होगा? गवर्नमेंट का लोड पड़ेगा ना। पीडीएस, हाँ, प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स इंक्रीज होगा ना। पीडीएस पे क्या होता है ना, पीडीएस पे क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। पीडीएस होता है क्या? पीडीएस क्या होता है? हाँ, तो पीडीएस में जो रेट फिक्स है उसी रेट में आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपना एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ेगा बाकी प्राइसेस का। और सर जैसे कि ट्रक ड्राइवर से इससे हम 50 रुपीज में खरीदा, लेकिन हम आपको 12 रुपीज में, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन मोटिव क्या है? सामान पहुंचाना ना। लोग मर जाएंगे भाई, लाइफ का सवाल है। जैसे देखो कि अभी ऑक्सीजन वो बनाया गया था, ऑक्सीजन एक्सप्रेस बनाया गया था, फिर क्या ऑक्सीजन वो ग्रीन लाइन बनाया गया था। ऑक्सीजन के सिलेंडर को गाड़ी पुलिस वो दे रही थी, एस्कॉर्ट कर रही थी, मालूम है ना। कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के गाड़ी को कोई देखा है? ऑक्सीजन के सिलेंडर वाले गाड़ी को पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। जिस डिस्ट्रिक्ट से जा रहा था ऑक्सीजन वाला सिलेंडर, उस डिस्ट्रिक्ट से पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी। कोई रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? तो दैट वाज द थिंग।
ऊपर से एक और आपको देखोगे शायद बेंगलुरु में ही हुआ था ना, एक बंदे का वो हार्ट ट्रांसप्लांट होना करना था, तो एक एम्बुलेंस वाला नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंचाया था, चलाया था और वहां तक पहुंचाया था। सर देखना कभी, एम्बुलेंस चलाया था नॉन स्टॉप और वहां तक पहुंचाया था। तो वो भी, उसको पूरा वो कॉरिडोर ही फ्री कर दिया था पुलिस वालों ने, मतलब जहां से जब से वो गाड़ी वहां से गुजरने वाली थी वो पूरा रास्ता खाली था। मूवी बनाया क्या? नहीं वो मूवी नहीं, वो हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट एक जगह से निकाल के बनाया क्या, जो भी हो, तो हेलीकॉप्टर से भेज देता। समझ में? हाँ, देखो ऑथेंटिक नहीं, आपको देखो ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन इज मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, देखो ऑप्शंस में क्या होता है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ये नहीं कि ऑथेंटिक, ऑथेंटिक बोल के कुछ नहीं होता। एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिचुएशन में, उस सिचुएशन में कौन सा एक्शन आप लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो एक रियल केस स्टडीज लेते हैं। हाँ चले लास्ट वाला फोर्थ वाला ऑप्शन भी है ना, बी वाला क्या है, रेलवे वाला ना, रेलवे वाला ना बी वाला, आप करेंगे ना। ओके तो बताओ आपका कौन सा ऑप्शन होगा, विच ऑप्शन वुड यू टेक? इन चारों के अलावा आपके पास और कौन सा ऑप्शन है बताइए। सर थर्ड ऑप्शन तो ऑप्शन बी के साथ सप्लीमेंटिंग मोर, हाँ वो डाल सकते हो आप, उससे कुछ एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो उसके अंदर के, ठीक है हम अलग से कुछ अवेलेबल करा देंगे और कुछ दे देंगे, तो ठीक है वो हो सकता है, कोई इशू नहीं। सप्लाई थ्रू रेलवे से ट्रक से कर सकते हैं। एडेड टू दैट वी कैन आल्सो डू वन थिंग, वी कैन परचेस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट एंड गिव इट टू, ये भी हो सकता है, परचेस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट एंड गिव इट टू द पीपल, ये भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट करती है, ये होता ना, लोकल परचेज उसको बोला जाता है, आपको अथॉरिटी होती है कि आप लोकल परचेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर वो सिचुएशन में मार्केट जो रूल का, जो मार्केट का सब प्राइस होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, आप कैसे चेंज करोगे, मार्केट प्राइस आप रेगुलेट करोगे, नहीं कर सकते ना। जैसे कि सर हमने क्या है, डिस्ट्रिक्ट डीसी लोग वो देता है ना, मार्केट प्राइस देता है, पर वो मार्केट प्राइस किसका है, तो गवर्नमेंट का वो है सर, वो एसेंशियल कमोडिटीज, हाँ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू कर सकता है, फिर वो लॉ लेजिस्लेशन करने में टाइम लग जाएगा ना, कहाँ से दोगे आप? सर वो तो साथ अगर प्रोमोट कर देगा तो ओपन में इफेक्ट हो लगा सकता है, बट इतना जल्दी करना मुश्किल है, प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना, ठीक है। आप वो सब जो दवा का एसेंशियल जो करते हो वो तो प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए ना, वैसा मार्केट में माल अवेलेबल होना चाहिए तभी उसको कर सकोगे, है ही नहीं, कहाँ से अवेलेबल करोगे? एक्यूट शॉर्टेज बोल तो रहा है, एक्यूट फमाइन हुआ है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, और वो ऑप्शन ही आपको लेना चाहिए एक्चुअली आमतौर पे, ठीक है, समझ में आया? चलो कोई बट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चौथा ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन? हाँ, इज इट करेक्ट, लिया जा सकता है कि नहीं? कुछ नहीं लाएगा, इमीडिएट तो कुछ होगा नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट भी लाएगा तो फिर वो तो टाइम लगाएगा ना, बोले ठीक है डिश साहब हम ला रहे हैं, तो लाते रहेगा अभी तक। बाद में बोल सकता है कि ठीक है बाद में अब तब लाइए, ठीक है, क्लियर है? सर आपको क्वेश्चंस व्हाट्सएप या उस पे टाइम नहीं ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास लिखा नहीं है, ठीक है, वो तो प्रिंट आउट दे देंगे ना आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, व्हाट्सएप ही करने की, और कैसे बड़ा होता है, पेपर देखा नहीं है अपने एथिक्स का, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होता है, अभी डिस्कस करेंगे ना, एक निकालते हैं ना। चलो नेक्स्ट लिखो, मिस्टर एक्स छोड़ो, हमारा ही नाम लिखो। अरविंद हैज स्टार्टेड या रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग एज ए, Arvind has recently started working as a
cyber security expert, recently started working as a cyber security expert, ब्रैकेट में एनालिस्ट at a government intelligence organizations, full stop. During the course of his work, he stumbled upon a memo ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट which reveals that the government is spying, Government is spying, FIND. SPYING, spying on a leader of opposition parties with alleged Maoist link, alleged Maoist link. Full stop. He discussed this matter with his superior officer, who tells him that though spying was illegal, it was essential for national security. He also tells Arvind that sanction for the spying came from the highest echelons or authority, ECHELONS, echelons of the government. Full stop. He further warned Arvind not to divulge fact of the case, divulge, DIVULG, divulge facts of the case to anyone else in the organizations, and especially no one on the outside, as it may
as it may lead to his dismissal, as it may lead to his dismissal from the organizations, or even his arrest from treason, or even his arrest for treason. Treason, TREASON, treason. However, Arvind, being an honest officer, find himself in a deep conflict he feels that the spying, apart from being illegal, could also be misused by the government, for settling political scores, with his opponents. Which of the following options should he take? Number 1, do nothing, as he does not want to risk losing his job. Do nothing as he does not want to risk losing his job. Or end up in jail for treason. दूसरा, talk to the head of the organization. Talk to the head of the organizations to get his opinion. On the matter, and then do as he says. Next, send an anonymous letter to the press leaking the detail of the case. Next, go to the press directly.
with the detail of the case. ठीक है, चलो फटाफट। Sir, option 2 is more accurate. क्या बोल रहा ऑप्शन 2? Talk to the head of the organizations to get his opinion on the matter and then do as he says. एक बात बताओ, वो ऑनेस्ट ऑफिसर है और हायर ऑफिसर ये भी बोल सकता है काम करो चुपचाप रहो, तुम ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रिटी कहाँ गई? प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कहाँ गई? इलीगल अपने ही लोगों के ऊपर में वो करना गलत है ना। खैर बताओ बताओ और लिखो लिखो। जो ऑप्शन सही लगेगा उसका बारे में लिखिएगा। हाँ वही लिखना है ना। यहाँ पे तो we can identify two objectives. First of all, two objectives are required to be achieved. First one is that to stop the government from spying, or take some actions through which government will stop this. And the second option is to save the job of Arvind, and at the same time to prevent, save himself from wrath of government in case he is taking actions against them. So these are the two objectives. So according to the options available, I feel that option 3 would be the best one. Because through this, the चुप्पे से दे दिया और है ना। Yes sir, government will be checked, and at the same time his job will be saved because he wouldn't be identified. This can be done. ओके, और दूसरा डालो, बाकी सब लिखो। For the professional ethics. So it's going to send an adverse letter to the place linking the details of the case. इसमें तो सब चालू किया है। चालू है, दिखाओ सारा सारा पॉइंट लिखो, सारा सारा। टेक योर टाइम। Related to national security, okay. सर इनमें से बस एक ऑप्शन ही लेना है क्या? हाँ ये ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन 4 कैन आल्सो बी टेकन। क्या बोला 4? Go directly to the press yes. So he might be removed from the job, but judiciary is there to protect him better. जुडिशरी नहीं आता, नहीं तो अरविंद बाहर नहीं होता ना। Sir, really, I will also dismiss it, so he can approach the court. कोर्ट में नहीं कुछ होता, ये कोर्ट होगा ही नहीं। हाँ theory में तो है, but practical तो Sir, but sir, as a cyber security expert ना, अंदर गवर्नमेंट में तो
First and the most duty is to tell his superior. Okay. तो वो हर केस में तो ऐसा नहीं होता है. हाँ तो बोल देगा तो उसका मोटिव फुल, अरे जो पढ़ाए हैं वो एथिक्स, उसको भी तो एंगल, रियलिटी में आप यही करोगे मैं जानता हूँ, बट एक्चुअली में क्या करेगा रियलिटी में मतलब एथिकली क्या करे, एथिकली कौन सा सही है सर प्रॉपर एप्लीकेशन के तो बताएंगे ना, ऐसा नहीं कि ये हमको मिला है मुझे सर, तो लीगल बेसिस जाएंगे तो किसको जाएगा सर, ऑफिसर्स को पूछेगा ना। अरे ऑफिसर को ऐसे करके तो पूछ भी नहीं सकता, ऑफिसर को तो पूछे सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई है, व्हाट आई शुड डू, यही बोलेगा ना, तो ऑफिसर लोग क्या बोलेगा, चुप बैठो वहां पर, लेटर लिख बता से पता चल जाएगा तुम्हें क्या। हाँ और लेटर जहाँ लिख के दिए तो फिर तो गए, कुटाई होगा बाद में कुटाई होगा, तुम कहाँ जाओगे मालूम नहीं चला। अब इंटेलिजेंस एजेंसी का मसला होता है, वो तो दिक्कत हो जाती है ना उसमें, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, और इंटेलिजेंस में मतलब गड़बड़ होता है ना, द प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड इन प्रोफेशंस। ओके हाँ बताओ, प्रैक्टिकल अप्रोच लिखो, बताओ, पर एक्चुअली यू शुड फुलफिल द मोटिव ना। ऑप्शन 2 discuss to him about the duty of the action, consequences of being dishonest with one's professional ethics. This talking to my help to serve my purpose of being an honest. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द डायलेमा, इशू क्या है यहाँ पर, सिर्फ वही नहीं, वो तो करोगे ही, वो तो है ही, बट और क्या है यहाँ पर, नहीं यार वो तो है ही, हम बोले एथिक्स के अंदर में उसका क्या है, सिक्योरिटी एथिक्स, चलो ठीक है वो तो है ही प्रोफेशनल का, बट और क्या यहाँ पर स्टिक पर है, यहाँ पर कंसाइंस, इनर कंसाइंस उसका कन्फ्लिक्ट कर रहा है यार, कैसे हम इसको अलाउ करें, वो चीजें हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट, और कंसाइंस जल्दी ऐसे ठीक तो होता नहीं है, उसको पूरा फॉर्डर चाहिए उसके लिए, तो फिर कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंसाइंस का कॉन्फ्लिक्ट है, कंसाइंस, इनर कंसाइंस उसको धिक्कार रहा है यार, इस तरह की चीज है, जैसे वो ले लो ना, कौन सा स्पाई था, एडवर्ड स्नोडन वाला केस सुने हो, नहीं सुना पक्का, अरे स्नोडन का बहुत फेमस केस था, और स्नोडन का केस आपका उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी एक, एडवर्ड स्नोडन का केस जाकर सुना, विशल ब्लोअर का, एनएसए में था, आपका सीआईए में था वो, और वो एक तरह का वो एनालिस्ट था, कॉन्ट्रैक्टर, और गवर्नमेंट का जो स्कीम था प्रिज्म, उसी के बारे में वो सबको डिस्क्लोज कर दिया था कि गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग ए प्रिज्म, जिसमें सब अमेरिकन स्पाई में है, सब अमेरिकन के डाटा, नेट, वायर जो भी है, वो ईमेल, सोशल मीडिया, एवरी मीडिया इज इन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, और गवर्नमेंट उसको देख रही है, लाखों करोड़ों डाटा, प्रोजेक्ट का नाम था प्रिज्म, और ये चीजें हैं, तो उसे उसको निकाला भी गया वो, फिर उसको रशिया उसको सपोर्ट किया, देश में तो रह ही नहीं सकता था वो, तो कहीं भी रहता, सीआईए से बच के रह पाओगे, अगर रशिया में भी नहीं बच सकता वो, बट फिर भी समहाउ अदर रशिया उसको प्रोटेक्ट किया ना, तो बाहर, देश से बाहर भागना पड़ा उसको, तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट जो करती है, वहां की गवर्नमेंट तो चुपे चुपे करती है, हम लोग उतना चुप चुप बेकार का चीज, हम लोग साफ बोल देते हैं देखो भाई तुम लोग सब सर्वेलेंस में हो, ठीक है, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, अदरवाइज बस हम लोग साफ, हम लोग टू द पॉइंट, हम लोग है, हमारी एजेंसी भी टू द पॉइंट है, देखो भाई ऐसा छुप छुपा के हम लोग नहीं करते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेसी, हर एक चीज हमको मालूम है, जहां कुछ गड़बड़ की कुटाई होगी विल गो देयर। खैर, तो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, एज ए इनर कंसाइंस का कंफ्लिक्ट है, तो भैया ऐसा है कि आपको इसको दो चीज देखना है, एक तो अपना जॉब देखना है, नया नया है भाई, जॉब भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, ऐसा थोड़ा ना कि गवर्नमेंट जो है बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा है, नहीं, गिन चुन के चवन्नी अठन्नी मिलता है, अब वो जो मिलता है उसको अपनी फैमिली भी चलानी होगी, और लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बवाल, ठीक है, तो वो चीजें मिलता है, तो
उसको इनर कंसाइंस उसका धिक्कार रहा है कि ये गलत है। गवर्नमेंट, सपोज करो आज की गवर्नमेंट ये है, कभी ट्विस्ट द टेबल, देन कभी टेबल ट्विस्ट हो गया इधर का उधर, देन क्या होगा, वो लोग भी करेगी और देखेगा कि अच्छा ये लोग इन्वॉल्व था, तो फॉर हियर एक्चुअली फोर्थ, मतलब आपका वो फोर्थ ऑप्शन वाज मोस्ट करेक्ट। वो उसके दोनों मोटिव को फुलफिल करेगा। सर इससे जॉब भी बच जाएगा? जॉब नहीं बचेगा। तो जैसे अगर फोर्थ ऑप्शन जाए तो मतलब देश छोड़ के जाना। हाँ, देश छोड़ के नहीं, आप ही विल, पब्लिक समझेगी कि विशल ब्लोअर का है ना, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल। विशल ब्लोअर तो देश में नहीं रह सकता। नहीं, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल है ना, गवर्नमेंट ने बनाया ना विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल। तो विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन आपको मालूम होना चाहिए पहले लॉ कौन सा है। अब जो भी हो, मतलब मैं यहाँ पर सब कुछ एथिकली बता रहा हूँ ना, इलीगल तो कुछ ऐसा तो बता नहीं रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्या होगा, ये ऐसे है। सीनियर साफ मना कर, सीनियर साफ मना कर देगा। सर अगर एनोनिमस लेटर नहीं, एनोनिमस लेटर में कोई मतलब नहीं, फिर गवर्नमेंट का वो होगा ना, बेइज्जती, बेमतलब का बेइज्जती होगा, बेमतलब का मतलब हफाजत, अगर और से कोई मोटिव कुछ होगा नहीं, एट द एंड वो सब सलटा लेंगे वो लोग। कुछ दिन प्रेस में फॉर्डर मिलेगा, मसाला न्यूज चलेगा, अच्छा गवर्नमेंट पकड़ी गई स्पाई करते हुए, बस 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और ये भाई सब जाएंगे, आज ना कल तो मालूम चल ही जाएगा। अगर जाना ही है तो पूरी तरह से जाए। These are the theoretical आंसर, आपको यही लिखना है, ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। जैसे एक मित्र थे हमारे, अभी पोस्टेड है, एसपी वगैरह है, और एक भाई साहब का केस था जो, नहीं, ही इज IRS ऑफिसर, नॉट पोस्ट एसपी, IRS ऑफिसर। और एक भाई साहब हैं वो उधर में, आपके जो पहले थे वो दोस्त नहीं हमारे। एक आपको केस सुना था ना कि केस पे मतलब IPS सेलेक्ट हुआ था, वो फिर वो UPSC में बैठ के वो मेंस के एग्जामिनेशन में चिप ऑप सब लगा के बैठ के चीटिंग कर रहा था। हाँ, सोचो, जो भी हो, नाम याद है ये सब। अब वो आदमी, उसको एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर मिले थे, पिछली बार बहुत अच्छा नंबर मिला था। और हमारे एक मित्र थे, उसको एथिक्स में 20 मिले थे, 20। जबकि अगर उसका नंबर अच्छे मिलते ना तो उसके ऑप्शनल में हाईएस्ट नंबर थे, हाईएस्ट। वैसा ऑप्शनल किसी का आया ही नहीं होगा उतना नंबर अभी तक का। नहीं, सोशियोलॉजी नहीं, उसका उनका ऑप्शनल था शायद पॉलिटिकल साइंस का। नहीं, वो उसका नहीं, एक दूसरे फ्रेंड का बता रहा, IRS जो है, अभी भी IRS ही है। उसको एक बार वो बता रहा था कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको फोन भी किया था, वो नोटबंदी के टाइम में, कि थोड़ा देख लेना हमारा। फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें क्या फाइनेंस मिनिस्टर थे, थोड़ा देख लेना। अब कैलकुलेशन मत करो कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, ये सब लिखने बोलने की जरूरत नहीं है। तो उस समय वो मना कर दिया था, नहीं, हम नाम नहीं देखेंगे, आपको जो करना है कर लो। उस आदमी को एथिक्स में 20 नंबर मिले, और वो जो चोर था उसको मिले थे हाईएस्ट नंबर एथिक्स में, जबकि सबसे एथिकल, प्रैक्टिकली एथिकल, सबसे करप्ट था, बट लिखने में वो 1 नंबर था। तो एट द एंड जो भी हो, खैर ठीक है, समझ में आया हरप्रीत क्या बोला? लिख लो ऑप्शंस 4 पहले लिख लो, फिर उसका ऑप्शन 4, दैट इज गोइंग टू द प्रेस डायरेक्टली। ऑप्शन 4, दैट इज गोइंग टू द प्रेस डायरेक्टली would be the most difficult thing to do for the officer. To do for most difficult thing to do for Arvind, and he could land up in detentions, and he could land up in detention like many other whistleblower, like many other whistleblower, with his career ruined, with his career ruined
and with his career like many other whistleblower. blower, with his career ruined, ruined, and his image is spoiled by, and his image is spoiled by accusation of treason, accusation of treason. आते हैं हरप्रीत, बताएंगे। देखो इसमें नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है? व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता ना। इफ ऑपोजिशन लीडर है, देयर कैन बी ए पॉलिटिकल वेंडाटा ऑल्सो ना। अच्छा वो है, उसको फंसा देंगे हम, हो सकता लीगल ना हो, एलीज्ड है, मतलब वो तो कह ही सकते, कोई भी आदमी एलीज्ड हो सकता। बट नेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इफ दैट पर्सन इज थ्रेट टू द नेशन, if that incident is threat to the nations, then in the name of national security it can be done. But national security का ठप्पा चिपका के किसी भी काम को वायलेट नहीं किया जा सकता। मान लो कि मैं हमारे घर का पड़ोसी है, वो क्या है, हमसे झगड़ा करता है, सपोज करना हमारे वाइफ से झगड़ा करता है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि इफ आई एम ए ऑफिसर, इंटेलिजेंस विंग में हम है, तो हम उसको कोई एलिज्ड कुछ वो चार्ज डाल देंगे और उसको गोली मार देंगे, ऐसा इट्स लीगल? इट्स नॉट लीगल। ये हम नहीं कह सकते ना कि नहीं नेशनल सिक्योरिटी है, उसका वो एलिज्ड लिंक्ड है उसका टेररिस्ट से, ये गलत है और इसको नेशनल सिक्योरिटी नहीं बोलते। नेशनल सिक्योरिटी एक होना चाहिए रियल, तो मालूम तो होगा ना कि भैया उसको मतलब का आप एलिज्ड लिंक बना दे रहे हो और वो चीजें करा रहे हो, ठीक है। देखो फुल स्टॉप, he may also happen that it may also happen that the intelligence apparatus of the country is weakened due to such revelations, is weakened due to such revelations, REVELATION, revelations, full stop. But at the same time it may also happen that the citizen of the country, realize the pitfall of such spying and Arvind's bravery may also help to inspire other whistleblower and conscious citizen to come forward and support his cause,
to come forward and support his cause. Full stop. At the end, he should undertake. At the end, he should undertake those course of action. At the end, he should undertake those course of action which addresses both his inner conflict, and serves the wider public interest. And Serve the wider public interest. Hence, before taking any action, he should investigate. He should investigate secretly to know more about. He should investigate secretly to know more about the facts of the case. More about the facts of the case. He should try to gauge. The different viewpoints. He should try to gauge the different viewpoints on this matter. he should try to Gauge different viewpoints on this matter by getting input from his peers. Without revealing any details of the case. Full stop. Finally, if he is convinced of the illegality of the spying, he should come out in the public. With the details of the case, and proof of the government. With the details of the case and proof of the government's complexity. Complicity in the illegal spying. Operations. So stop. Through his words and actions. Arvind should seek to steer
या stir, Arvind should seek to stir a rational debate on the implications. Stir a rational debate on the implications. So, seek to Stir, STIR, stir a rational debate on the implications of such spying on individual rights to privacy, on individual rights to privacy. Full stop. Political privacy, comma, political freedom, Political rights. right to privacy, comma, political freedom and national security, Right to privacy, comma, political freedom and national security. Full stop. Such a debate such a debate should refrain from simply attacking the government. Such a debate should refrain from simply attacking the government on the issue and should instead lead to systemic institutional changes to reform the country's intelligence apparatus. Intelligence apparatus. ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप डाल सकते हो। ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला दोनों तो मतलब तीनों उतना सही नहीं है, क्योंकि वो फिर वही बताएगा, उसमें आप लिख लेना जो भी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आप जाओ पुलिस के पास, मतलब वो प्रेस में जाओ, बट आपको पहले उसके बारे में पूरा डिटेल आपको मतलब कर लेना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर लोगे तभी जाना सही होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लो। You are a secretary in a government department. You are a secretary in a government department, and your minister has proposed an unemployment grant. And your minister has proposed an unemployment grant. And your minister has proposed an unemployment grant. ठीक है, which is expected to cost the public exchequer heavily. Which is expected to cost the public exchequer
exchequer, 𝐸𝐥𝐸𝐞𝐈, exchequer, heavily, 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 full stop. Having already taken the decision, having already taken the decision, comma, he asked you to come up with research, he asked you to come up with research, come up with research to support the scheme. To support the scheme, full stop. Despite your best effort, despite your best effort, you fail to find socio-economic benefit in it. Despite of your best effort, you fail to find socio-economic, you fail to find socio-economic benefit in it, benefit in it. You approach the minister with relevant facts, you approach the minister with relevant facts and studies, with relevant facts and studies, and ask him to reconsider, his decision, and ask him to reconsider his decision. Full stop. Instead, he asks you to suppress the negative impact. Instead, he asks you to suppress the negative impact and actively promote the scheme. Suppress the negative impact and actively promote the scheme through mass media. And actively promote the scheme through mass media. As the proposed, as the perceived social impact are more important. As the Perceived social impacts are more important. As the perceived social impacts are more important than economic impact. More important than economic impact. Full stop. Elections are due. Elections are due in recent times. Elections are due in short recent times, and political party currently in power is expected to win. Political party currently in power is expected to win. Full stop. You are also due for promotion at the same time. ठीक है, you are also due for promotion at the same time. due for promotion. हाँ, मतलब ड्यू फॉर प्रमोशन माने आपका प्रमोशन रुका हुआ है. ड्यू फॉर प्रमोशन एट द सेम टाइम.
मतलब हाँ फर्स्ट ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड टू fully cooperate in the situation. You are expected to fully cooperate in the situation. In the situation and cooperate in the situation and make the scheme a success. And make the scheme a success. However, flawed its foundation. However, flawed its foundation may be. However, flawed its foundation may be. ठीक है, चलो पहला, list the different stakeholders in the above situation. List the different stakeholders in the above situation. In the above situation and mention their perspective interest. And mention their perspective interest. Next, discuss the ethical dilemma. Discuss the ethical dilemma which you face in this situation. Discuss the ethical dilemma which you face in this situation. Full stop. Some of the alternatives for you to handle. Next point. Some of the alternatives for you to handle the situation could be. Some of the alternatives for you to handle the situation could be. Number 1, do as asked by the minister. Number 1, do as asked by the minister. Asked by the minister. Next, insist on publication of result. Insist on publication of the result. And let the public decide. And let the public decide whether it want the scheme. And let the public decide whether it want the scheme. Want, W-A-N-T, want the scheme. W-A-N-T, want, wants the scheme. W-A-N-T or wants the scheme. Next, last, call a press conference. Call a press conference and brief the media. Brief the media about the result and the close attitude of the minister. And the close, C-A-L-L-O-U-S, close attitude of the minister. And a close attitude of the minister. ठीक है, इसमें से इसको आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है, देख के इसको सॉल्व करके लाना। और भी मैं आप लोगों को एक ग्रुप में एक और कुछ केस स्टडीज और 10-12 केस स्टडीज देंगे, उसको एक घर वाले खाली देख के लाना। कल वी विल डिस्कस दैट पॉइंट, ठीक है, क्लियर है? सर वन क्वेश्चन, सर एक नेहरू का कुछ प्रिंसिपल्स था ना, पंचशील, नॉन इंटरफेरेंस टू पीपल ऑफ ट्रैवल एरियाज, तो उस हिसाब से लाइक
if people are not willing something, then we will not force them, even though it is for their protest. यही प्रिंसिपल है ना सर? हाँ ये है, वैसे बहुत सारा जगह में है ना, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में यही किया था, इंटरफेयर नहीं किया था। मतलब इवन though it is for progress, we will not interfere, ये होता है। तो सर ऐसे भी होता है, for example, political parties, they used to manipulate people. जैसे कि अभी इलेक्शंस में फ्रीबीज होते हैं ना, लाइक इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह, अल्टीमेटली दिस आर हार्म वोटर्स लाइक दिस एट द हाँ घूम फिर के वहीं जाएगा ना। तो ब्यूरोक्रेट ये चीज को पता है, but then what people want is that they need to satisfy their immediate wants. So they need to satisfy. Even the political leader wants to give it. तो ऐसे ब्यूरोक्रेट इसमें क्या स्टेप होना चाहिए? देखो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला लोगों को ये जागरूक करो कि भैया इसमें आपको जो ये मिल रहा है इसकी कॉस्ट ये पड़ेगी आपको। Given that this is in a tribal area, देखो ट्राइबल एरियाज में आपको क्या होगा ना, हाँ ट्राइबल एरिया मेंशन करना पड़ेगा। देखो ट्राइबल एरिया मेंशन करने के लिए अलग से हमने एक काउंसिल बना रखा, ट्राइबल काउंसिल बना हुआ है ना, वो ट्राइबल काउंसिल डिसाइड कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेट देम डिसाइड, उनका डिसीजन फाइनल होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एंड यू कांट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सर उन लोगों के अंदर भी तो ब्यूरोक्रेट्स हो, हाँ होगा, पर वो सिर्फ वही डिसाइड नहीं काउंसिल के अंदर ब्यूरोक्रेट्स नहीं, वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, कोई ऑफिसर नहीं होता उसके अंदर में। सर ऐसे केसेस में तो इसमें तो एथिकल डिलेमा होता है, डायलेमा होगा, बट सिंस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा, इथिकल डायलेमा कहाँ होगा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही चीजें हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको बोल रहा है कि आपको करना पड़ेगा, देन यू कांट डू एनीथिंग। इम्प्लीमेंट कर देना, यस इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि उस एरिया में वही चीज होगा जो वो डिसाइड करेंगे। तो सर जैसे जनरल एरियाज पे, जनरल एरियाज में कैन डिसाइड, इन जनरल एरियाज यूजुअली तो अलाउ करते हैं, पर वो प्रैक्टिकली अलाउ करते हैं ना, लिखने के लिए आपको करोगे नहीं जी। इसी क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन है ना, वही है, बताओ इसमें क्या करोगे, ठीक है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको थोड़ा देखना। टुमारो विल टेक अप मोर केसेस, ठीक है। एप्टीट्यूड के कुछ केसेस आते हैं, बहुत अच्छे केसेस आते हैं इसमें, इसी में लोग फंसते हैं, इसमें और इमोशनल इंटेलिजेंस में, ये दो ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग फंसेंगे। इसके बाद विल डू द इमोशनल इंटेलिजेंस और सारा चीज। अच्छा हम लोग का केस के संग संग, हम लोग टॉपिक के संग संग केस स्टडीज भी होता जा रहा है, तो ये सही चीज है, ठीक है। चलो एनी डाउट, जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं केस स्टडीज आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप में, और सूरज सर आपको भेज देंगे। अच्छा आप लोगों का नंबर ऐड नहीं है ना व्हाट्सएप में, ठीक है, मतलब एथिक्स वाला पेपर में।